वुमेन आर ऑब्जेक्ट मीन्स दे आर नॉट गिवन चॉइस. तो वुमेन का वे ऑफ लाइफ क्या था? In childhood, they have to live according to father, in adulthood according to the husband, and then in the old time according to the son. ठीक है, तो ये क्या हुआ? Just recognizing the subjecthood of men. ठीक है, though this is itself misleading, that even men have not been subjects. Men themselves have been objects also. Objects of what? Objects of culture, objects of power. So this year one essay topic came, that was women, men and women. Women have been given this responsibility and men are being given this responsibility. So that essay topic was trying to tell you that it is a misconception that even men are subject. In fact, men are also not subject. They are also object, because we are not making the free choices. ठीक है, तो ये सब एक स्टीरियोटाइप विजन है. आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ, in order that you write an essay, you should have a very good command of one philosophy around which most of the essays are revolving, and that is existentialism. The philosophy which I am talking about, man as an object, woman as an object, is existentialism. ठीक है, तो जो subject है, subject means a person who is given choice, and object means a person who is not given choice. तो what is Alexa? Object. ठीक है, तो which is not given choice. ठीक है, तो ऐसे ये जो फिलॉसफी है, जिसके पास चॉइस है उसके पास फ्रीडम है, तो उसका एग्जिस्टेंस है. जिसके पास चॉइस नहीं है उसके पास फ्रीडम नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. ठीक है, आगे जाके व्हेन वी विल स्टडी एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो हम पढ़ेंगे सात्र का कॉन्सेप्ट. सात्र फिलॉसफी इज existence is prior to essence. ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगी, बाद में रिलेट करेंगे. तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. Let us assume master was free, so master will be subject and slaves will be object. ठीक है, so masters will have freedom. Freedom is ability to make choices, and slaves have no choice. They are not given choice. They have to live according to what is being told. जिसका choice नहीं है, मतलब you are not accepting that person's identity. तो slave doesn't have no identity of his own. Identity नहीं. आप कौन हैं? आपकी सिर्फ ये identity है, आप slave हैं. किसके स्लेव हैं? मास्टर में. इस मास्टर के हम स्लेव हैं. इतनी आइडेंटिटी आपके लिए काफी है. ठीक है, लाइक फॉर वुमेन यू डू नॉट हैव एन आइडेंटिटी. तो हु आर यू? मिसेस दिस, मिसेस दैट. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब आपकी आइडेंटिटी नहीं है. आइडेंटिटी किसकी है? कि आप किसकी वाइफ है. इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है नो आइडेंटिटी, but subject is supposed to have its identity. Identity यानी कि existence होता है. कौन? तो आज की रैशनैलिटी से थोड़ी आप जज करोगे. अभी इंडियन छोड़ दो, इंडियन पे एक आंसर नहीं दे पाए तुम लोग.
एंड आई एम नॉट इम्प्रेस कि हम इंडियन की आपसे कोई बात सुने. आप बस ये समझना है, और ये समझिए रैशनैलिटी डेवलप हुई है ना, ये हम आज की बात कर रहे हैं. What I want that when I use these terms, you should understand the meaning. ठीक है, तो मैम एक सेकेंड समझ लो, हमको रियल मास्टर और रियल स्लेव से मतलब नहीं, बट when we use the language, we use language in a metaphorical manner. आप मेटाफोरिकली लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए. ऐसा कहा जाता है ना, बहुत सारे पिक्चर में या कहीं सीरियल में देखोगे कि यू कैन नॉट, इवन सुप्रीम कोर्ट सेज दैट वुमेन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज चैटल ऑफ मैन, और ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, तो ये every judgment, everything is based on some or the other philosophical understanding. So language, what we are talking, we do not know the meaning of the sentences we talk. Philosophy will help you in understanding that the word a person wants to say what. Fine. So subject, आप कहते हो कि I want my identity. Identity means your existence. Your existence should be felt. It's your choice. So you can, number of times people say, why do you want to go for civil services? You say that I want to go for civil services to help the country to become great. हमें सोशल सर्विस करनी है, तो लोग कहेंगे फिर एनजीओ क्यों नहीं ज्वाइन किया. तो यू कैन सिंपली हैव दिस वेरी सिंपल आंसर दैट आई वांट टू ज्वाइन बिकॉज आई थिंक इट विल बी solving my existential question. This can be a very good answer for especially the girls. Fine, it's a like my existence, it's such a big thing, such a very important thing that women in power, be in administration or be in parliament, is itself a revolutionary idea, because a woman have not been given opportunity also to decide what they should wear, how they should live. Same thing, agar same person, woman, if you can think also of being there in the decision making structures, this itself is a revolutionary idea or not. जिसको अपने नाम का डिसीजन नहीं था, अपने कपड़े का डिसीजन नहीं था, आज आप उसे कलेक्टर या मिनिस्टर बना रहे हैं और वो डिसीजन ले रहा है. इज इट नॉट अ रेवोल्यूशन? इट इटसेल्फ इज अ रेवोल्यूशन. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, हाउ डीप और हाउ इम्पोर्टेंट दिस थिंग इज. तो as far as the girls are concerned, they should be giving this answer only. Why civil services? Not for social change or anything. ठीक है, आप you are doing it for your existence, isn't it? But you knew this. You knew this. You are studying here for your existence, and how important it is. How important going into civil services or in any decision making thing can be normal for men, but it's a big achievement for women, and it itself is a very revolutionary step. You can say that India is having its own story of a silent revolution. शायद जितनी गर्ल्स होंगी उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि वाई दे आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज मेजॉरिटी में सब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि सब प्रिपेयर कर रहे तो हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिलहाल अभी नौकरी नहीं है तब तक के लिए टाइम कट रहा है. ठीक है, बट स्पेशली अगेन फॉर वुमेन, फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द lower caste, lower strata of the society, going into civil services is not just serving the country. It is a very personal, it has to be a very personal goal. What personal goal? Your existential issue. Because until and unless
you will not bring your very personal emotions or personal cause. You will not be giving that much effort which is required. And the idea इसके पीछे कितना revolutionary idea है उसको शायद हम समझते भी नहीं होंगे. But I hope you have understood this. Women of the class, please respond. Are you understanding? Yes, ma'am. हाँ, तो आपके लिए और आपके साथ जो men है उसके लिए आपके लिए और भी बहुत serious issue है. If you want, and if a woman, one woman becomes something, this itself brings a social change, because the parents are encouraged in sending girls to the schools. You all are coming from a very creamy layer section, but the reality in the villages at these level is very, very different from, you may not have even thought in your imagination. We have interacted with such type of girls also, that the family will not at all allow to venture into education, forget the competition. So consider that you all have got this opportunity, you are very lucky to make the 100% use of it, and don't let it, you have to relate it as your existential question. ठीक है, समझ में आया? लड़कों का कोई दिक्कत नहीं है, उनकी शादी हो जाएगी, माँ बाप 10-15 साल दहेज से काम चल जाएगा, है ना? तो लड़कों को तो माँ बाप सेटल करा के ही मानेंगे, लेकिन आपको खुद को सेटल करना पड़ेगा. आपको इसको एग्जिस्टेंशियल इशू जैसे लेना है. हैव यू अंडरस्टूड? सो मास्टर वर्सेस स्लेव, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. Fine, and that is what I just wanted to tell you, how this thing, मतलब क्या social relations के context में. Let's not talk about in philosophical terms. Let's come back to very empirical thing, that the society was divided into two classes, master and slave, and that was a slavery as a mode of production. ठीक है?